Today I am going to teach how to frame question from future perfect tense. Sentence 1. She will have completed her homework. She will have completed her homework. क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. क्वेश्चन फ्रेमिंग फर्स्ट टाइप by using helping verb. First of all, will she have completed her homework? Mark of interrogation. Mark of interrogation is very necessary at the end of the sentence because we are framing questions. First type question we can make like that. Second type, what will she have completed? What will she have completed? वह क्या पूरा कर चुकी होगी. इसका मतलब she will have completed her homework. क्या होमवर्क हम रिमूव करेंगे तो उसके स्थान पर जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो व्हाट का प्रयोग किया जाएगा. व्हाट इज इंट्रोगेटिव वर्ड. विल शी हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क. क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी. व्हाट विल शी हैव कंप्लीटेड, वो क्या पूरा कर चुकी होगी. एंड थर्ड टाइप वी कैन ऑल्सो मेक क्वेश्चन हु will have completed her homework. Who will have completed her homework? अपना काम कौन पूरा कर चुकी होगी. अर्थात she will have completed her homework. Future perfect tense. Will have, shall have, helping verb and third form of the verb is used here in future perfect tense. Second number sentence. The gardener will have watered the plants. The gardener will have watered the plants.
माली पौधों में पानी दे चुका होगा। द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। जस्ट टू सी हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन। First try by using helping verb. First of all, will the gardener have watered the plants? Will the gardener have watered the plant? क्या माली पौधों में पानी दे चुका होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेकंड टाइप, who will have watered the प्लांट्स? पौधों में पानी कौन दे चुका होगा? Who will have? We remove gardener, the subject, and who is working as a subject. Who will have watered the plants? Third type, sentence number 3. I shall not have bought a new bike. मैं एक नई बाइक नहीं खरीद चुका हूँगा। I shall not have bought. Shall have क्रिया, not will be used between have and shall. Question frame. Number 1. Shall I not have bought a new bike? क्या मैं एक नई बाइक नहीं खरीद चुका हूँगा? Shall I not have bought a new bike? Second, a new bike रिमूव करेंगे, यहाँ आएगा what. What shall I not have bought? This time we can frame question. What shall, मैं क्या नहीं खरीद चुका हूँगा, अर्थात I shall not have bought a new bike. Next, standard 4. They will not have prepared for the examination. They will not have prepared for the examination. वे परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर चुके होंगे। क्वेश्चन फ्रेम,
First try by using helping verb. Will they not have prepared for the examination? Will they not have prepared for the examination? क्या वे परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर चुके होंगे? सेकंड टाइप क्वेश्चन, who will not have prepared for the examination? परीक्षा के लिए कौन तैयारी कर चुके होंगे, अर्थात दे विल, कौन नहीं कर चुके होंगे? दे विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, हु विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए तैयारी कौन नहीं कर चुके होंगे, अर्थात दे विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. I will teach you how to frame question from future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Sentence first. They will have been walking in the park for half an hour. They will have been walking in the park for half an hour. वे आधा घंटे से बगीचे में टहल रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 1, will they have been walking in the park for half an hour? क्या वे आधा घंटे से बगीचे में या पार्क में घूम रहे होंगे? सेकेंड टाइप वी कैन फ्रेम क्वेश्चन. Removing part, where will they have been walking for half an hour?
वे आधा घंटे से कहाँ पर टहल रहे होंगे। वेयर, इसका मतलब दे विल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क फॉर हाफ एन आवर। सेकेंड सेंटेंस, sentence number 2, he will not have been reading the Ramayana since 7 a.m. He will not have been reading the Ramayana since 7 a.m. वह 7 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहा होगा। अब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। फर्स्ट टाइप विल ही नॉट have been, will he not have been reading the Ramayana since 7 a.m. Mark of interrogation. Will he not have been reading the Ramayana since 7 a.m. सुबह 7 बजे से क्या वह रामायण नहीं पढ़ रहा होगा। सेकंड टाइप वी कैन फ्रेम ऑल्सो व्हाट by removing Ramayana. What will he not have been reading? What will he not have been reading since 7 a.m. वो 7 बजे से क्या नहीं पढ़ रहा होगा। इसका मतलब है he will not have been reading the Ramayana since 7 o'clock या 7 a.m. Sentence third, I shall have been working in this college since 2018. I shall have been working in this college since 2018. मैं 2018 से इस विद्यालय में कार्य कर रहा हूँगा। Now we can frame question. First type, shall I have been working in this college since
2018. Mark of interrogation. Second type, we can also frame question by removing college here. College is the name of place. Where shall I have been working? Where shall I have been working since 2018? 2018 से मैं कहाँ कार्य कर रहा हूँगा, अर्थात आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज सिंस 2018. You can understand it well. Fourth sentence. Sentence number 4. She will have been talking on telephone. She will have been talking on telephone for 15 minutes. She will have been talking on telephone for 15 minutes. वह 15 मिनट से टेलीफोन पर बात कर रही होगी. क्वेश्चन फ्रेम. फर्स्ट टाइप. Two types we can frame question. Will she have been talking on telephone for 15 minutes? Mark of interrogation. Will she have been talking on telephone for 15 minutes? क्या वह 15 मिनट से टेलीफोन पर बात कर रही होगी? क्वेश्चन फ्रेम होगा. सेकेंड टाइप वी कैन फ्रेम क्वेश्चन ऑल्सो. हु विल हैव बीन टॉकिंग ऑन टेलीफोन for 15 minutes. 15 मिनट से टेलीफोन पर कौन बात कर रही होगी, अर्थात वह she will have been talking on telephone for 15 minutes. Like the same way we can frame question from future perfect continuous and future perfect tense. Thank you very much.